Good afternoon, friends. Due to some network issue, today we are attending our lecture little bit late. So, without wasting any time, let us start for the lecture. Now, first of all, I would like to say that for yesterday's terminology, many of you have sent your works to me, and that works are good. So, good to them who have sent their work. And the people who are not sending their work may send it to me as soon as possible. Okay, so yesterday, as I said, now our chapter is actually starting with the glossary or with the terminology of accounting. Now yes, yesterday we have learned 7 such words. That is a business transaction, that is event, capital, drawings, liability, current liability, and internal and external liability, and current and non-current liability. Now let us take some of the short explanations so that it may be easy for you to remember, and a short revision for that. So in short, business transaction means exchange of goods and services between one person to another having some monetary value. Event is a result obtained from business transaction. Capital means an investment made by the owner to start the business, that can be in cash or any other form. Then drawings is opposite to capital. Drawings means reduction of capital. When an owner withdraws for the personal use, that is a drawings. Liability means amount payable in future, that is a liability. Now internal liability means within the business, external means to the third parties. Then again current liability is for within the year, less than 1 year, short term liability. And non-current liability is a long term liability, and it is payable for more than 1 year. Now friends, moving towards the next word, that is number 8, and it is written on page number 13. Assets. Now yesterday only I have said that word asset came in previous 1 or 2 words, but I said that we will understand when the word comes. Okay, so now we are reading assets. So everyone listen carefully. There are 2 important aspects in the business: liability and assets. We have obtained the information about liability. Liability we know, that amount payable in future. Now they are telling that we are having 2 aspects in the business, that is asset and liability. Means you all understand that with the liability, asset is also required. Okay? Let us have information about liability on the other time. Okay, now we are just focusing to the book as good examples are given over. Now asset means any such tangible or intangible product or item which is of ownership of the business and has economic value. Now this is the exact definition for this asset. What they are telling, friends? Asset means any such tangible or intangible. Now you may be having question that what is tangible and what is intangible. That again in the next word it will come what is tangible and intangible. But for instance, I am saying that tangible means which you can touch, and intangible means which you cannot touch, you can only feel that. Okay, so asset means any tangible or intangible product or item which is of ownership of business and has economic value. That thing must have some value. If it doesn't have any value, then again it is not considered as asset. In other words, asset means economic sources which are held by owner and from which there is expectation of economic benefit to the business in future. What they are telling, that if you are holding such things, that in future you can get some economic value for it. For example, yesterday I have said land, building, furniture, machine, all are our assets. I have said it yesterday if you all are remembering.
Now comparing that thing to our definition, it is truly correct because furniture, machine, building has economic value in money. When you are purchasing a furniture, it may be of 20,000. When you are selling it, we are getting something. We are getting some 5,000 or 6,000 for the old furniture, but still we are getting that economic value. And in the same way, building and land, we have opposite too. When we are purchasing land, building or our house maybe, it is of 1 or 2 lakhs before many years. Now today its value is double, triple and 10 times. So assets values decreases or increases. Okay, so that are all the assets. Classification of asset is also important. See what they are writing: non-current assets, current assets and fictitious assets. And again reading, friends, assets they are categorized of 3 types: non-current, current. See, current and non-current, now you all understand whether it is a liability or it is asset. Where you have within 1 year और short time, और नॉन करंट के लिए आप क्या याद रखेंगे कि मोर देन 1 ईयर होगा और वो हमेशा लॉन्ग टर्म में रहेगा. अगर वो एसेट भी हो सकता है, वो लायबिलिटी भी हो सकती है. ठीक है फ्रेंड्स? ओके, moving to the next page. Okay, so that was about asset. So asset means the thing which have an economic value in future. Okay, in short, in our language we say asset means milkat. This land, building, furniture, all are our assets. Now for understanding broadly what are assets, different types of assets are explained on page number 14. Word number 9, non-current assets. Non-current assets are identified on the basis of time. See, again they are writing the time. Like non-current liability, non-current assets are also for more than 1 year. Just now I have said whether it is a liability or it is asset. First you all understand this thing that whether it is a liability or it is asset, current and non-current you should know. Current means within 1 year, non-current means more than 1 year. What they are writing? They are known as long-term or fixed assets. What they are known as? They are also known as long-term or fixed assets. Fixed means suppose you are purchasing a furniture for your house, then you will not change their furniture in very short time. अगर आप ऐसा तो नहीं करते कि अपने घर में आप फर्नीचर लेके आते हो, तो फॉर एग्जांपल आज 25 अगस्त है, तो आज आप लेके आ रहे हो और 1 सितंबर को आप वो फर्नीचर चेंज तो नहीं कर दोगे. You will keep it for long time, for not more than 1 year. You will keep for long and long time. Okay, so that they are explaining here also. They are known as assets or fixed assets: land and building, plant, machinery, furniture. These all things you know. Now again some of the new words are coming: trademark, copyright, patent, goodwill, franchise are also included in non-current assets. Now many of you may have heard these words: patent, trademark, copyright. In short, for the instance, for this introduction lecture, now you understand that patent, trademark, copyright are just logo, जो logo होता है. फॉर एग्जाम्पल एडिडास का लोगो कैसा होता है आप सबको पता है, फास्ट ट्रैक का कैसा होता है. सो डिफरेंट have different signs and logos. All these are copyrights and patents. But actually if we need to understand that, I will explain when we are meeting personally, because this thing cannot be explained like this, what these patents and trademarks means. And this is not required also now. It is just required that you should know what are assets. आपको कोई नहीं पूछेगा कि अब आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा एडिडास, फास्ट ट्रैक का. नो फ्रेंड्स, आई एम जस्ट गिविंग फॉर योर कन्वीनियंस एंड ऑल योर फॉर अंडरस्टैंडिंग. अभी आपको क्या पढ़ना है कि एसेट क्या है, वो ट्रेडमार्क क्या होता है, वो हमें अभी पढ़ना नहीं है. वी विल लर्न इट इन दिस ओनली 11th standard, but in some other chapters. Okay, yes, these assets have life for more than 1 year. Current assets can be categorized in, sorry, non-current assets can be categorized tangible. अभी मैंने बोला tangible मतलब जिसको आप टच कर सकते हैं, intangible मतलब जिसको टच नहीं कर सकते, तो वो दोनों एक्सप्लेन किए थे. Again number 10, tangible assets. Tangible assets are those assets which are having physical existence. जो हम देख सकते हैं कि वो एक फर्नीचर है तो वो दिख रहा है, वो खड़ा है,
अगर एक मशीन है तो वो भी दिख रहा है, पर पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट वो दिखेंगे, पर वो आपका ही है, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो कैसे आते हैं, क्यों आते हैं? नाउ यू डोंट नीड टू नो, यू जस्ट नीड टू नो दैट दे आर इंटेंजिबल बिकॉज वी कैन नॉट टच देम. ओके, यू कैन टच योर लोगो, बट वो आपका ही है, वो आप प्रूफ कैसे करोगे? Okay, so that is a different thing to understand. Now you are with the topic. Okay, so tangible assets can be seen and can be touched. Tangible assets are subcategory of non-current assets. Intangible assets, land, building, plant, machinery, furniture are included. Okay, उसके बाद आता है 11th word, intangible assets. Intangible word itself clarifies the meaning of these assets. Intangible assets do not have physical existence. वो हम सिर्फ फील कर सकते हैं, वो हम देख भी नहीं सकते. They cannot be seen and cannot be touched. Intangible assets are also subcategory of non-current assets, trademark, copyrights, patents, goodwill, etc. अब ये सब क्या है वो आप आगे पढ़ेंगे, पर सिर्फ आपको इतना ही जानना है कि ये पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, दीज आर लोगोज एंड ब्रांड नेम्स ऑफ द कंपनी. वो हम देख तो सकते हैं, वो हम टच भी कर सकते हैं, आपको लग रहा होगा, बट वो हमारा ही है. लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर हमारा है, तो उसका कुछ प्रूफ रहता है कि वो हमारे पास है. Now patent, trademark, copyright is a different thing which we will learn in the deeper for the next chapters. अभी आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि assets. Asset means a thing that has a economic value and money can be received in future. Now assets there are three types of assets: non-current, current, and fictitious. उसके बाद नॉन करंट में सब टू टाइप्स है, इधर लिखा है टेंजिबल विच कैन बी टच्ड, इनटेंजिबल विच कैन नॉट बी टच्ड. अब आता है सेकंड टाइप का करंट एसेट्स. तो आपको वो तो पता ही होना चाहिए कि वर्ड करंट लिखा है, इसलिए वो विथ इन 1 ईयर होगा. These assets are that kind whose time duration is less than 1 year. These assets can be converted into cash. अब ऐसा क्यों लिखा है कि कन्वर्टेड इनटू कैश? अभी तो मैंने बोला कि अगर हम फर्नीचर सेल करते हैं, जो फर्नीचर नॉन करंट एसेट हुआ, तो वो भी सेल करने से पैसे तो मिलते हैं और करंट एसेट भी सेल करने से पैसे मिलते हैं. बट उन्होंने करंट एसेट में ही क्यों लिखा है कि दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश? उसका रीज़न ये है कि नॉन करंट एसेट्स में कैश तो मिलता है, बट नॉन करंट एसेट्स आर ऑफ लॉन्ग टाइम. कैश मिलता है पर लॉन्ग टाइम के बाद मिलता है, एंड करंट एसेट्स आर विथ इन 1 ईयर. सो कैश कंपैरेटिवली टू नॉन करंट एसेट्स थोड़ा जल्दी मिल जाता है. ठीक है, ये दोनों डिफरेंस है. इसलिए करंट एसेट्स में वो लोग लिख रहे हैं कि दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश. नॉन करंट भी कर सकते हैं, पर उसमें डिफरेंस क्या रहेगा? वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करेंगे और ये शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे. For day-to-day transaction of the business, these assets are used. Day-to-day business चलाने के लिए ये assets हम use करते हैं, और वो क्या है? In current assets में क्या आएगा? Cash balance, bank balance, debtors, bills receivable. अब देखिए debtors, bills receivable आपको अभी नहीं पता चलेगा वो क्या है, वो हम आगे इस वर्ड्स में ही पढ़ेंगे, पर आपको याद अभी कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस से समझ सकते हैं. Now हमारी कैश बैलेंस, जितना हमारे पास कैश है वो और बैंक में जो कैश पड़ा है वो दोनों कैसे करंट एसेट हुए और एसेट ही कैसे हुए? दिस लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर सब सकते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए हम यूज करने से हमें कुछ वैल्यू मिले. तो समझ सकते हैं कि फर्नीचर, मशीनरी एसेट है, बट ये कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस ये एसेट क्यों है? तो ये एसेट इसलिए है कि हमारे पास कोई आइटम नहीं है लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर जैसे. हमारे पास सिर्फ कैश है जिससे हम कुछ भी खरीद सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं डे टू डे ट्रांजैक्शंस. सो इट इज एन एसेट दिस वे दैट यूज दिस कैश फॉर एनी पर्पस. सो इट इज ऑल्सो एसेट. एंड बैंक बैलेंस भी एसेट, कैश बैलेंस जैसे ही है कि कैश ही है हमारा और वो हमने ऑन हैंड नहीं रखा है, हमने बैंक में रखा है.
और ये डेटर्स बिल्स रिसीवेबल जो वर्ड लिखे हैं वो आगे हम समझ सकते हैं कि वो क्या है। रॉ मटेरियल स्टॉक फिनिश गुड्स क्यों हमारे करंट एसेट में गुड्स आ रहा है, तो वो करंट एसेट कैसे हुए, क्योंकि हम बिजनेस में जो स्टॉक रखते हैं वो जल्दी बिक सकता है, वो बिकने में 2 और 3 साल नहीं लगते हैं। ओके फ्रेंड्स, ए प्रोडक्ट फॉर विच ट्रेडिंग इज डन बाय बिजनेस इज नॉन एज गुड्स ऑफ द बिजनेस। देखिए अभी वो समझा रहे हैं कि ये स्टॉक मतलब क्या है, तो जो सामान हमने बेचने के लिए रखा है अपनी शॉप में उसे स्टॉक ऑफ गुड्स कहते हैं। अब मैं आपको एक डिफरेंस समझाना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि फर्नीचर हमारा एसेट ही हुआ क्योंकि हम उसको लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं। और आप थोड़ा अलग तरीके से सोचना कि आपकी शॉप ही फर्नीचर बेचने की शॉप है, यू आर हैविंग ए शॉप ऑफ फर्नीचर, तो अब उसमें आप फर्नीचर तो रख सकते हैं पर फर्नीचर आपका एसेट नहीं, आपका स्टॉक हो सकता है। क्यों? बिकॉज आप फर्नीचर को परचेज और सेल करते हैं, मतलब आप फर्नीचर का बिजनेस, तो फर्नीचर अब आपके लिए एसेट नहीं है। थोड़ा समझना डिफिकल्ट पड़ेगा बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सी एसेट मींस व्हिच स्टेज फॉर लॉन्ग टाइम। अगर हम XYZ और क्लॉथ का बिजनेस करते हैं और दूसरा कोई बिजनेस करते हैं उसमें फर्नीचर लेते हो तो वो फर्नीचर लॉन्ग टाइम के लिए यूज करोगे, नो डाउट, देन दैट इज योर एसेट। बट सपोज यू आर हैविंग ए शॉप ऑफ फर्नीचर कि आप रोज फर्नीचर लोगों को बेच रहे हैं तो वो आपका एसेट नहीं होगा, वो आपका गुड्स होगा, क्योंकि इधर क्लियरली लिखा है। मैं फिर से रीड करता हूँ, ए प्रोडक्ट फॉर विच ट्रेडिंग इज डन। ट्रेडिंग मींस परचेज एंड सेल। ट्रेडिंग क्या है? परचेज एंड सेल करते हो, तो वो आपका एसेट नहीं होगा फ्रेंड्स। वो आपको समझना पड़ेगा, धीरे धीरे समझ में आएगा बट कंसेप्ट आपको क्लियर रखना पड़ेगा क्योंकि आगे चैप्टर इस पे। यस, एग्जाम्पल, ग्रेन इज गुड्स फॉर द बिजनेस मैन ऑफ ग्रेन्स। सेम एग्जाम्पल दे रहा गिवन दैट ग्रेन्स का एग्जाम्पल दिया और मैंने फर्नीचर का एग्जाम्पल। ओके फ्रेंड्स, आफ्टर 13 we have liquid. The word liquid only says its meaning. लिक्विड मतलब क्या? जो जल्दी फ्लो हो सकता है। ओके, लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड यू ऑल नो इन साइंस। सॉलिड मींस व्हिच स्टेज एंड व्हिच डज नॉट फ्लोज एंड लिक्विड मींस व्हिच फ्लोज इजीली। सो मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ कि नॉन करंट एसेट्स है वो सॉलिड है क्योंकि वो जल्दी फ्लो नहीं कर पाता, एंड करंट एसेट्स आर लिक्विड एसेट्स क्योंकि उनकी एक्सचेंज जो है उसकी फ्लो जो है वो बिजनेस में जारी रहती है। सपोज बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस डज नॉट स्टेज फॉर लॉन्ग टाइम। आपके पॉकेट में कैश तो रहता है पर वही नोट का कहाँ रहता है? आप कुछ परचेज करोगे, कुछ सेल करोगे तो कैश आएगा, परचेज करोगे तो कैश जाएगा, मींस कैश डज नॉट स्टे विथ यू, सो इट इज ए लिक्विड एसेट। ओके, नाउ वो क्या लिख रहे हैं? लिक्विड एसेट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज सब कैटेगरी। करंट एसेट्स की भी सब कैटेगरी बना रहे हैं। ऑल करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग स्टॉक आर लिक्विड एसेट्स। जो भी करंट एसेट में लिखा है वो सब लिक्विड एसेट्स ही है सिवाय स्टॉक, एक्सक्लूडिंग स्टॉक। व्हाई? स्टॉक
real asset. Now real assets means assets that have value in reality. तो क्या दूसरे एसेट्स की वैल्यू रियल में नहीं हो रही? उसकी वैल्यू भी हो रही है, बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस दैट अगेन वी आर सीइंग these assets have market price, it has a realizable value. अब कई बार ऐसा होता है कि कोई एसेट्स ऐसा होता है कि जो हम परचेस कर लेते हैं बट फ्यूचर में उसका कुछ वैल्यू नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने अपने उसका जो यूज़ है वो पूरा यूज़ कर लिया, टोटली वी हैव 100% वी हैव यूज्ड दैट थिंग, तो अभी उसका स्क्रैप में भी कुछ नहीं आएगा. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. एक एसेट जो है उसका जो वैल्यू हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में और दूसरे का नहीं कर सकते, क्योंकि यू हैव टोटली यूटिलाइज्ड इट. These assets can be converted into cash. Real assets, cash can be brokered, means cash can be taken. Okay. तो ये real assets is not any type of assets. It is just saying the value can be realized from the sale or the value cannot be realized from the sale of assets. सिर्फ वही समझाना चाहते हैं कि एसेट जब सेल कर रहे हैं तो उसका कुछ वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो कौन कौन से एसेट्स के वैल्यू मिल सकते हैं? करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स के वैल्यू मिल सकते हैं. नॉन करंट के भी मिल सकते हैं, पर वो टेंजिबल होना चाहिए, इंटेंजिबल नहीं होना चाहिए. व्हाई आई एम टेलिंग दिस? वो फिर से कोई अलग नाम सोच के उसका नाम बदल के वो कंपनी चलाए. जैसे टेलीकॉम सेक्टर में अभी आपने देखा कि वोडाफोन और आइडिया दोनों कंपनी मर्ज हो गई. मर्ज मीन्स साथ में आ गई. अब उनका नया नाम आ गया है, बट नए नाम में कुछ डिफरेंस नहीं है. वोडाफोन एंड आइडिया वेर डिफरेंट. अब उसको क्या बोलते हैं? वोडाफोन आइडिया. मीन्स वो दोनों कंपनी मर्ज हो गई, साथ में हो गई, इसलिए अब उसका नाम सिर्फ क्या रहेगा? वोडाफोन आइडिया. अलग से नहीं बोलना है. अभी क्या बोलेंगे? वोडाफोन आइडिया. और बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको एग्जांपल देना हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक एंड विजया बैंक. अब ये 3 बैंक हो गए साथ में. अगर सबको नेम साथ में रखना है तो कोई बात नहीं, बट ये सब गवर्नमेंट बैंक्स है, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इन सब का नेम अभी एक ही होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा. मीन्स देना बैंक और विजया बैंक का जो भी पेटेंट ट्रेडमार्क होगा वो खत्म हो जाएगा. इसलिए ये समझाना चाहते हैं हमें कि टेंजिबल एसेट्स value can be realized and they can be converted into cash, but in non tangible assets their all patents, trademarks will be removed and no value can be realized from them. अभी वो हम समझ सकेंगे fictitious assets. Okay, last type of assets. Fictitious assets do not have a physical form. मतलब वो intangible assets के जैसे ही हैं. Realizable value of these assets is zero. उसका कुछ नहीं मिलेगा. These assets cannot be converted into cash. बाकी सब assets हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये fictitious assets ये कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते. This is a non-recurring expense. अब recurring वो आप मैथ्स में पढ़ चुके हैं. Recurring means which is repeated, and non-recurring means which is not repeated and which is only for once. तो ये एक्सपेंस बिजनेस के लिए एक बार करते हो और उसका बेनिफिट मिलता ही रहता है, बार बार एक्सपेंस नहीं करना है, बट फ्यूचर में उसका कुछ वैल्यू नहीं रहता. सपोज यू आर मेकिंग ए गुड ट्रेडमार्क, गुड ब्रांड फॉर योर बिजनेस, सो आप उसके लिए पैसा भरते हो. इन फ्यूचर इफ योर बिजनेस इज क्लोज्ड और इज सोल्ड डाउन, फिर उसका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, इट्स वैल्यू विल बी जीरो. ओके, this benefit of expense is available for the period of time more than 1 year. The amount is written off in certain years, thus shown an asset. अब ये आपको फिर सम्स के लिए काम आएगा, इसलिए अभी नहीं समझ पाओगे.
तो just we are reading and going. Every year predetermined amount is written off as an expense. उसके बाद जो लिखा है वो आपके लिए टोटली न्यू टॉपिक है, सो मैं रीड ही नहीं करूंगा क्योंकि उसमें जो टॉपिक दिए हैं वो आपको पता ही नहीं है, सो वी जस्ट आर इग्नोरिंग. इसमें जितना लिखना है वो मैं सिर्फ अंडरलाइन करके आप सबको सेंड कर दूंगा, ठीक है. Okay, so these were all types of assets. Which are they? Assets first we have seen. Now name three types: non-current, current and fictitious. Now non-current means which are for more than 1 year, and again there are two subtypes: tangible which we can touch, intangible which we cannot touch. Now again current assets we have seen. Current assets are for less than 1 year, and उसमें क्या याद रखेंगे? Non-current में furniture और machinery, furniture, बिल्डिंग एक्सेट्रा. और नॉन करंट में क्या याद रखेंगे? कैश और बैंक सिर्फ याद रखेंगे. फिर लिक्विड मीन्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली एक्सक्लूडिंग स्टॉक. एंड अगेन अकॉर्डिंग टू द रियलाइबिलिटी ऑफ कैश. कैश किन में से मिलता है? तो रियल एसेट्स में से मिलता है. रियल एसेट्स मीन्स करंट, लिक्विड एंड टेंजिबल. और फिक्टिशियस एसेट्स मीन्स जिसमें से हमें कैश मिल सकता नहीं. Okay, from which cash cannot be realized, that is intangible assets. So all these are the types of assets, and I will send how much you need to write in your books, and as soon as possible you all will send that work to me. So that's all for today. Thank you.